Linear momentum and its conservation, right? Today we're going to talk about that. We have two objects, right? This is of mass m1 and this is of mass m2. m1 is moving with a velocity u1, m2 is moving with a velocity which is u2. Okay? So this is u1 is the initial velocity of ball 1 and this is the initial velocity of ball 2, right? This is before collision. अच्छा अब होगा क्या, ये दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी, ठीक है? They will collide. This is m1, this is m2, and when they will collide, this ball will exert an action force and this ball will exert a reaction force. I'll call this action, I'll call this reaction, right? The action force is F1 of 2, the reaction force is F2 of 1. So this is during collision. और उसके बाद क्या होगा, ये M1 V1 हो जाएगा और ये M2, ऐसा भी हो सकता था कि दो बॉल जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं उसके लिए V1 नेगेटिव हो जाता है। जैसे स्नूकर बॉल जाके स्ट्राइक करती है तो एक स्लो हो जाती है, एक फास्ट हो जाती है, एक फास्ट हो गई, एक स्लो हो गई, इट्स लाइक दैट। या ऐसा भी हो सकता है कि एक राइट पे चली जाए, एक लेफ्ट पे चली जाए, उससे वो उसकी जो होगा वो नेगेटिव। सो दिस इज आफ्टर कोलिजन। अब जो बॉल 2 है उसके अंदर कुछ चेंज इन मोमेंटम आया। सो वी हैव चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 1 एंड 2। बॉल 1 के अंदर क्या आया है, m1 v1 minus what, m1 u1. This is the change in momentum of ball 1. What is the change in momentum of ball 2? m2 v2 minus m2 u2. According to Newton's third law, when the two objects collide, there is an action and reaction. So action is equal to minus reaction. And the reason for this is because the reaction is in the opposite direction to action. Action is equal to minus reaction. What is action here? Action हो रहा है बॉल 2 के ऊपर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ action क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ F12, and reaction can be written as minus, reaction को हम लिखेंगे minus F21. Force is mv minus mu over delta t. So I can write here m2 v2 minus m2 u2 over delta t minus m1 v1 minus m1 u1 over delta t. ये delta t से कट जाएगा and we'll get what, we'll get m2 v2 minus m2 u2 minus m1 v1, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और अंदर के साथ भी हो जाएगा, and we get the equation, ये m1 u1 एक तरफ आ गया और m2 u2 एक तरफ आ गया और m1 v1 एक तरफ आ गया और m2 v2 भी एक तरफ आ गया। ये आपको ये बता रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum of the entire system after the collision. Momentum is conserved, and this leads us to the principle of conservation of momentum. The principle of conservation of linear momentum states that the total momentum of the system before collision is equal to total momentum of the system after collision, provided that no external forces act on the system. ठीक है? या आप लिख सकते हैं दो, इसको आप आसान तरीके से लिख सकते हैं, the total momentum of an isolated system remains constant
ठीक है, एक तो ये है एक लाइन में, लेकिन दूसरी जरा आइसोलेटेड का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे। दूसरा जो है आप वो लिख सकते हैं दैट द टोटल मोमेंटम of the system before collision is equal to the total momentum after the collision, provided that no external forces act on that system. कोई बाहर से फोर्स आके नहीं लग रही, और ये इक्वेशन जो मैंने आपको लिख के दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें चीजें दे विल स्टिक टुगेदर, जैसे एक बॉल है दूसरी बॉल के साथ टच करती है और वो दोनों जुड़ जाते हैं। कोलिजन्स में एक और चीज होती है दैट इफ आई हैव अ मास m1 हियर, आपके पास m1 है, दिस इज u1, this is another mass here m2, this is u2, and for example they join and they stick together, ये दोनों जुड़ जाते हैं। एक जैसे हमने किसी ने बुलेट फायर किया और बुलेट जाके किसी वुडन बॉक्स के अंदर एम्बेड हो गई है और फिर दोनों इकट्ठे मूव करें, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और आपको वो सिनेरियो जिस तरह के देगा कि वो कहेगा टू ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर, दैट्स ऑल। अब जब स्टिक टुगेदर करेंगे तो मोमेंटम ने फिर भी कंजर्व होना है, एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी v, एंड वी कैन राइट हियर m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v. So this is what, this is the mass of ball m1, this is the initial velocity of ball 1, this is also mass of ball 1, this is mass of ball 2, this is the final velocity that we have. आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं एज m1 u1 plus m2 u2 over m1 plus m2. It finds the common velocity of the two balls when they stick together. Acha ji, let us do some questions regarding this, since we have covered the main things in this topic. Acha ji, let us do a question here which illustrates this concept. Question number 7 जरा करें। इसमें आपने डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है कि अगर एक राइट पे जा रही है तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट पे जा रही है तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, m1 u1 plus m2 u2 is equal to what? m1 plus m2 into v. अच्छा, m1 आपके पास यहाँ पे क्या है, उसने कहा है कि the objects have the same mass, तो it doesn't matter, इसको हम m ले लेते हैं। u1 is plus 5, this is, अब ये m है, u2 is -3, ऐसे ही। m1 plus m2 में एक m हो गया, दूसरा भी m हो गया, into v, and this becomes 5m minus 3m is equal to 2m into v. So this is 2m over 2m, so v is plus 1. The answer is b, b for ball. तो आपने देखे साइंस का ख्याल रखना है, अगर साइंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो जो मर्जी कर लें। An object of mass 3 kg traveling at a speed of 6 collides with an object of mass 2 traveling in the opposite direction at a speed of 2 meter per second. The objects stick together during the collision. What is the speed and direction of combined mass after the collision? m1 u1 plus m2 u2 is equal to, they stick together, when they stick together after collision we get m1 plus m2 into v, and we have m1 as 3, u1 is 6, m2 is 2, and u2 is -2, and we have 3 plus 2 here into v, so 18 minus 4 over 5, 2.8 towards right because it is positive. अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि figure 2.1 shows an athlete crossing the finishing line in a race. As she crosses the finishing line, her speed is 10 meter per second.
she slows down to a speed of 4 meters per second. Calculate the impulse applied to her as she slows down. एक एथलीट रन कर रही थी, ठीक है, उसने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया, उसकी स्पीड 10 से 4 पे चली गई, आपने इंपल्स फाइंड करना है। इंपल्स इज f into t, by the way, f into t is mv minus mu, ये नेगेटिव है, दैट्स फाइन। मैग्नीट्यूड अगर देखें तो दैट इज 426, राइट। आप लोगों को अगर फोर्स और टाइम नहीं दिया हुआ तो आपने चेंज इन मोमेंटम से इंपल्स निकालना, ठीक है। अगर आपको फोर्स और टाइम नहीं दिया हुआ तो चेंज इन मोमेंटम विल बी यूज्ड टू फाइंड द इंपल्स, is equal to impulse, right? So the impulse applied to this is mv minus mu, and you will be able to figure out that mass is whatever, what's the mass, 71। इसको आप करेंगे तो आपका आंसर